बाकी ऑनलाइन क्लास रे मु रिकॉर्डिंग ऑन करछि किंतु फिर भी टेक्निकल एरर पई जदि रिकॉर्डिंग न होई पारुछि जो माने क्लास अटेंड न करूछंती से माने ही सफर हेबे काहे ना क्लास मु करछि आई थिंक 9 टा को समस्त अवेलेबल होबा कथा कार क्लास भी नाही अदर क्लास भी नाही त माने निजे अवेलेबल सेति हेई क्लास करिया कथा मोर भी हमर भी एठी जे वेलकम थिला आ वेलकम रे मु बहुत टायर्ड हे कि जस्ट आसिली फिर भी मु जदि क्लास करि पारुछि ताल तमे एते भी माने आई थिंक कि माने बिजी रहिया कथा नो जे एग्जाम हमर मंडे रे अछि हमें क्लास करि परिबानी बाकी जो पिला तनकर न आସୁଛନ୍ତି सेटा देखिया किंतु फिर भी मु रेकॉर्डिंग ऑन करछि बाकी कोन होउछि कोन न होउछि सेटा तो मु टेक्निकल एरर रे मु किछ करि परिबिनी बाकी रेकॉर्डिंग मोर ऑन अछि ओके अब जदि वॉइस न आସୁछि ताले सेतरे किछ करि परिबिनी मु काइना आ बर्तन रेकॉर्डिंग करी आ तुमको पठेया पई भी आ टाइम नाही काइना परीक्षा जेतु पाखरे अछि तो तमे निहाती एग्जाम जेतु पाखरे अछि फास्ट एग्जाम भी अछि तमे निहाती अटेंड करिया कथा ताले देखो जदि मु क्वेश्चन कहूछि क्वेश्चन हमर डी एंड ए ब्लॉक रो मु तुमको कहदिली जे हमर केते बडे क्वेश्चन अछि से क्वेश्चन डायरेक्ट आसीबो से भलिया ऑलरेडी तमर बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कशन होईची फॉर एग्जांपल जदि मु क्वेश्चन कहूची Mn2O7 is acidic whereas MnO is basic why तमर Mn2O7 टा होची कोन acidic MnO टा होची basic कोन भाई कोन रीजन नहीं परिबो हु कैन से एनीवन why Mn2O7 is acidic whereas MnO is basic कारे परिबो सर सर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में जे क्लियरली आंसर करिया को पड़ियो हमको हमर फास्ट करिया अछि जे Mn2O7 व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ manganese so manganese oxidation state is +7 that means highest oxidation state आ जदि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट अछि ताने ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव रे अछि ताने इलेक्ट्रॉन हमर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करि परिबो काना ऑब्वियसली हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट माने तमर डी इलेक्ट्रॉन सब पळेला डी जीरो कॉन्फिगरेशन तमर डी डी जीरो कॉन्फिगरेशन Mn+7 means डी जीरो कॉन्फिगरेशन डी जीरो माने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट रे डी जीरो कॉन्फिगरेशन माने इलेक्ट्रॉन ही नाही दैट मींस कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट करि परिबो हम जानचे जे द सब्सटेंस व्हिच एक्सेप्ट the substance which can accept electron density is called acid Lewis acid हम एटा कहि परिया को एसिड लुइस एसिड जोटा हमर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर परिबो त हम लुइस एसिड बोली कहबा बर्तन Mn+7 ना ऑब्वियसली डी ऑर्बिटल ला खाली अछि एना डी जीरो कन्फर्मेशन जदि हम करूची तमे जे डी जीरो माने तमरो डी रे सब तक ऑर्बिटल ला खाली अछि पांचटा जगह ऑर्बिटल कोन अछि खाली अछि डी जीरो किछि नाही ताने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट कर परिबो ना सेति पय एटा हम कोन कहबा एसिड बोली कहबा कोन भाई बिकॉज़ इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट रो डी जीरो कॉन्फिगरेशन अछि एटा एक्सप्लेन करिया को पड़िबो सिमिलरली इफ आई एम सेइंग MnO व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ MnO Mn+2 Mn+2 means D5 configuration D5 means D has electron density that means it can donate electron density एतरे हमर नथिला ये देइ पर नथिला सेति पे एक्सेप्ट कर देला खाली अछि but it is the d electron अछि ना D5 that means it can low oxidation state that means it can donate electron density can donate electron density जेहेतु ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर परिबो सो इट इज बेसिक इन नेचर वी कैन से अरे परिबो ना परिबोनी अरे क्वेश्चन नहीं परिबो सर बोलो सर वो तो D0 और D5 वो हाफ फील्ड है और वो तो कुछ भी नहीं है और नहीं हाफ फील्ड का मतलब नहीं कि वो नहीं दे सकता अब बोलो सर ये दोनों तो पूरा मतलब स्टेबल है तो सर फिर ये लोग एसिड और बेस जैसे बिहेव क्यों करेंगे तो नहीं ऐसे नहीं कि फॉर एग्जांपल D0 हम स्टेबल बोलेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एसिड कोई लिगैंड अगर आएगा तो ये एक्सेप्ट तो करेगा ना Mn2O7 ना कंपाउंड कैसे होगा अगर लिगैंड इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है ये एक बात है अगर ये इलेक्ट्रॉन देना ये इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल लिगैंड इसीलिए तो Mn+7 है लिगैंड के पास नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो अट्रैक्शन होता है जो भी हम देखे हैं CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में तो अट्रैक्शन की वजह से लिगैंड पास में आएगा वैकेंट ऑर्बिटल है लिगैंड कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करके बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा
तो डोनेशन कर सकता है, Mn+7 एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए उसको लुईस एसिड बोलेंगे। बट याद करो पिछले क्लास में मैं जो आपको पढ़ाया था कि सिनर्जी इफेक्ट, पाए पाए बैक बर्निंग जो इफेक्ट होता है कार्बोनिल कंपाउंड में, नाइट्रोसिल में जो डबल पाई स्टार ऑर्बिटल होता है, तो वहां पे मेटल अगर लो ऑक्सीजन स्टेट में रहेगा जैसे कि D5, तो ये रिवर्स बैक बर्निंग, फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग MnCO6 2+, तो मैंगनीज के साथ CO है, C111O है, तो यहाँ पे आपका पहले क्या करेगा, कार्बोनिल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर देगा, आपका डोनेट कर देगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैंगनीज +2 है ना, तो मैंगनीज +2 मतलब यहाँ पे D5, दैट मींस D इलेक्ट्रॉन में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, पाई स्टार, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस रिवर्स डोनेट कर सकता है, तो बैक बर्निंग बोलते हैं। तो यहाँ पे जब डोनेट कर रहा है तो ये कैसे बिहेव करता है, लुईस बेस की तरह, एक्चुअली हमारा होता है मेटल क्या, लुईस एसिड, लेकिन बैक बर्निंग जब होगा तो लुईस बेस की तरह बिहेव कर रहा है। तो यही बात है कि आपका मेटल लो ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो डोनेट कर सकता है, तो अगर डोनेट करेगा दैट मींस ऑब्वियसली उसको लुईस एसिड बोलेंगे। वैसे ही मेटल जैसे कि Mn+7 है, Cr+6 है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, दैट मींस वो इलेक्ट्रॉन डोनेट भी नहीं कर सकता, तो एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट कर सकता है, तो अगर एक्सेप्ट करेगा तो उसको लुईस एसिड बोलेंगे। तो अब मैं आपको कंप्लीटली नोट में भी लिखाया हूँ, मेटल विद हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट बिहेव लाइक लुईस एसिड, metal with low oxidation state can donate electron density, so behave like basic in nature, and intermediate compound, that means +4 +3 like this, it can donate can accept, so that's amphoteric substance, amphoteric oxide हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप का ये एक तो क्वेश्चन है, मतलब एक तो क्वेश्चन है, इसका आंसर यही होगा और इसका आंसर यही आपको लिख के आना है, ठीक है ना। तो और अगर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, एक्टिनोइड्स, एक्टिनोइड्स शो wide range of wide range of oxidation state, wide range of oxidation state, why तमर जो एक्टिनोइड अछि एक्टिनोइड रो वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट माने +2 +3 +4 +5 +6 +7 एम से शो करे, कौन पे शो करे, हु कैन से, अरे हु कैन से, एनीवन, अरे कारे परिबनी, सिंपल जब तुम्हारा सेम क्वेश्चन को मुझे बोले दोजी, व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट, व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट शो variable oxidation state, variable oxidation state, कौन यार आंसर है वो, why transition element show variable oxidation state, Sir, N1. Sir, due to less energy gap between N and N-1D. obviously हमर n-1d अछि आ ns अछि, जेमति कि हम कहू कोन 3d आ 4s, हमर 3d आ 4s भीतर लेस एनर्जी गैप, जदि 3d कथा कहू छी इन जनरल ट्रांजिशन एलिमेंट कहला, सो n-1d आ ns भीतर लेस एनर्जी गैप, लेस एनर्जी गैप, ସେଥିପାଇଁ वाइड वेरिएबल वाइड रेंज और सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। सिमिलरली एक्टिनोइड, एक्टिनोइड जनरल एक्टिनोइड रे तबर इलेक्ट्रॉन कोड एंट्री होची 5f रे ना, लैंथेनाइड रे 4f रे, एक्टिनोइड रे 5f रे, 5f पर कोन थिबो 6d थिबो, तापर कोन थिबो 7s थिबो, दैट मींस इट इज वाइड रेंज माने कोन, एटी 5f 6d और 7s एमाने भीतर एनर्जी गैप कम अछि, दैट मींस इट इज ड्यू टू, it is due to less energy gap, less energy gap between कौन 5f 6d and 7s orbital, তাহলে এମାନଙ୍କ ভিতরে তমর লেস এনার্জি গ্যাপ আছে, সেটাই আমি দেখো কোন ভ্যারিয়েবল অক্সিজেন স্টেট শো করতে সিম্পল, তুমি দেখো কনসেপ্ট জানি দিছো, তুমি যদি পচরা হচ্ছে যে হোয়াই ট্রানজিশন এলিমেন্ট শো ভ্যারিয়েবল অক্সিজেন স্টেট, তুমি তুরন্ত কনসেপ্ট বুঝিছো যে n-1d আর ns ভিতরে লেস এনার্জি গ্যাপ আছে, কিন্তু আক্টিনোইড কথা পচরা দেলা বর্তমান কনফিউজন হয়ে গেলে, এটা কেতেবেলে ক্লিয়ার হই পারিবো, তুমি কোশ্চেনটা পড়িদিবো, তুমি কোশ্চেনটা দেখিদিবো, ওয়ান্স দেখিদেলো আর অসুবিধা হবনি, আর পরীক্ষারে তোমার ডি ব্লক এলিমেন্ট র जो सब কোশ্চেন আছে 25-30 টা সেই ভিতରୁ ହିଁ ଆସିବ, ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ପାଖକୁ ଆସିଲା ଭିତରେ ସେ କୋଶ୍ଚେନ ଟା ଅଲରେଡି କରି ଦେଇଥିବା, ତେଣୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦବ ଏଇ କୋଶ୍ଚେନ ଟାକୁ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଡାଇରେକ୍ଟ କୋଶ୍ଚେନ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ କନଫ୍ୟୁଜନ ନ ହବାର ଅଛି, କାରଣ କନସେପ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଆମକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାର ଅଛି, ସେମ କନସେପ୍ଟ ରିଭାଇଜ ହଉଛି, ଏଠି ତମର n-1d ଆଉ ns ଭିତରେ ଲେସ୍ ଏନର୍ଜି ଗ୍ୟାପ, ଏଠି ଆମର ଆକ୍ଟିନୋଇଡ ରେ କଣ 5f ଅଛି 6d ଅଛି 7s ଅଛି, ତ 5f ଆମେ ଯଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ କନଫିଗରେସନ କରିଥିଲେ କଣ 5f 1 to 14, 6d 0 to 1 ଆଉ 7s 2, ଏଭଳି ଆମର କନଫିଗରେସନ ଥିଲା,
तामाने एठी 5d सॉरी 5f 6d और 7s भीतर लेस एनर्जी गैप अरे परिबो नहीं परिबोनी Yes, sir. ओके ताले Yes, नेक्स्ट sir. क्वेश्चन हां बोलो अरे बोलो किसी कुछ डाउट है आगे बढ़ेंगे हाँ सर आपको पढ़ा ओके ताले देखो क्वेश्चन फॉर एग्जांपल पचारुजी uranium 2 plus is a strong reducing agent strong reducing agent uranium 2 plus is a strong reducing agent why तम दीटा ए रिलेटेड दीटा ही क्वेश्चन आस परिबो गोटे होची uranium 2 plus is strong reducing agent सेकंड क्वेश्चन होची cerium 4 plus is a strong oxidizing agent strong oxidizing agent why तम दीटा क्वेश्चन गोटे होची यूरोपियम EU2 plus is a strong reducing agent आ गोटे होची cerium 4 plus is a strong oxidizing agent ताले यूरोपियम 2 plus कोन पे strong reducing agent हु कैन से अरे के कोइ परिबो अरे कोइ परिबो किए क्वेश्चन पढ़ाई छी ना अरे ऑलरेडी स्कूल में पढ़ाई छी जिनसटा ना ई दीटा क्वेश्चन अरे जानि छ ना जानि न हो ना ना आंसर देले आगो ओडिबा No, sir. केमते क्वेश्चन नहीं तो सर सुनिया दरकार देखो यूरोपियम 2 प्लस ठीक अछि हमें कन्फ्यूजन को देखि करिया दरकार आंसर किंतु फिर भी हमरो एग्जाम रे जहां आंसर पड़ी देखो कथा होची कोन आइदर मोर ए जिनसटा ठीक कि मोर ए प्रोसेसटा भूल मु सेटा आजि बंद ए जिनसटा जानि पारलेनी कोन पई फॉर एग्जांपल मु पिलांग बुझिया पई कि एक्स्ट्रा जिनस कहबी पिला परीक्षा रे आंसर कोन करिके आसीबे पिला एग्जैक्ट आंसर ता न कहि कि एक्स्ट्रा जिनस लिखिबे जेंति कि तमरो प्रीवियस क्लास रे गोटे क्वेश्चन करथिली व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट शो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स डी ब्लॉक एलिमेंट ऑलवेज शो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स तम से आंसर हवा दरकार जे ड्यू टू del T is very less so more number of electron can available or electron can jump into the higher energy level that's why high spin complex पिला आंसर कोन लिखि आसीबे ड्यू टू मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल that's why high spin तमे एग्जैक्ट आंसर तो लिखियो तापर तमे एक्सप्लेन करियो ना बाकी एई कांसेप्ट रे एई क्वेश्चन रे हमें कन्फ्यूजन को देखि कि एक्सप्लेन कर दे परिबा किंतु कन्फ्यूजन को देखि कि विदाउट कन्फ्यूजन भी हम आंसर कर दे परिबा फास्ट कथा होची तमर अछि स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट माने कोन रिड्यूसिंग एजेंट माने कोन द सब्सटेंस व्हिच हेल्प्स इन रिडक्शन ऑफ अदर माने अन्य को रिडक्शन कराय ता ना होची एजेंट अन्य रो रिडक्शन करे दैट मींस रिड्यूस अदर যদি রিডিউস অদর অন্যর রিডকশন করুছি তাহলে নিজের কোন হবো obviously oxidation that means undergoes oxidation itself तहन तम रिड्यूसिंग एजेंट काह कहबा जे अन्य को रिडक्शन करूथबो रिड्यूस अदर बट अंडरगोज ऑक्सीडेशन इटिसेल्फ निजर ऑक्सीडेशन होतबो ताले बर्तमान हम जानचे लांथानॉइड हमर यूरोपियम टा होची कोन लांथानॉइड ना हम जानचे लांथानॉइड रो गोटे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट अछि लांथानॉइड रो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट केते अरे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट केते व्हाट इज द कॉमन Sir, ऑक्सीडेशन केते +2. +2 पाठ पढा छाडी दियो डी ब्लॉक एलिमेंट रो +2 कहैतला लांथानॉइड रो +3 केबे पढिबो नोट रे तमर क्लियरली अछि लांथानॉइड आ एक्टिनॉइड भीतर डिफरेंस रे मु कहि देछि ता पूर्व रे पढि देछि लांथानॉइड रे +3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 भी देखाए +4 भी देखाए यूरोपियम +2 देखाए सेरियम +4 देखाए किंतु एक्टिनॉइड रे मु कहतली +3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट बट कैन शो +3 +4 +5 +6 +7 एटा सब कोइ नै खाता रे नोट केबे पढिबो परीक्षा सरी जाउ तापर पढा स्टार्ट कर दो बोलछे कहतले जे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होची कोन +3 ताले बर्तमान जदी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ताले यूरोपियम टा आउ स्टेबल कॉमन एंड स्टेबल ताले यूरोपियम टा कोन 3 को चेंज हो जिवो ताले मु कहि परिबि जे यूरोपियम 2 plus can change to europium 3 plus which is or as the common oxidation state change to common oxidation state of lanthanoids that is +3 that means हमर यूरोपियम टा +2 रु कुडी चेंज होबो यूरोपियम +3 को ताले प्रोसेस रे होची कोन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट दैट मींस ऑक्सीडेशन
ताले जदी एटी ऑक्सीडेशन होउची माने यूरोपियम टा ऑक्सीडेशन होउची ताले यूरोपियम टा कोन हो गुड रिड्यूसिंग एजेंट सिंपल गुड रिड्यूसिंग एजेंट ताले तुमको आंसर कोन लिखियर अछि सिंपल आंसर ये लिखियर अछि जे यूरोपियम कैन चेंज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट टू कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड्स कैन चेंज ऑक्सीडेशन स्टेट यूरोपियम रो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जिवो यूरोपियम कैन चेंज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट और यूरोपियम tend to change its oxidation state. Europium tend to change its oxidation state to common oxidation state lanthanide. এটা লিখি দউজি সো আতরে মু বলছে লিখি দউজি টিকে Europium tend to change its oxidation state to common oxidation state of lanthanides that is +3 তাने यूरोपियम 2 प्लस टा +3 चेंज होउची से ऑक्सीडेशन होउची ऑक्सीडेशन हेल्थ तो +3 को +2 टू +3 को चेंज हो ना ता माने प्रोसेस टा ऑक्सीडेशन ता माने यूरोपियम 2 प्लस टा होउची रिड्यूसिंग एजेंट अरे परिबो ना परिबोनी अच्छा एठी सेम जे कुछ सेरियम 4 प्लस टा कोन बे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माने कोन ऑक्सीडाइज अदर अन्य ऑक्सीडेशन करेबो ऑक्सीडाइज अदर निजर कोन हो बट undergoes reduction itself निजर कोन हो रिडक्शन हो त रिडक्शन माने कोन तमरा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट के लैंथेनॉइड रा +3 ताले 4 प्लस अछि से +3 को चेंज हे परिबो ना ताले हम कहि परिबो जे सेरियम 4 प्लस can change its oxidation state to common oxidation state or 2 plus 3 to cerium plus 3 as common oxidation state of lanthanoids is +3 जेहेतु तमरा लैंथेनॉइड रा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आछि +3 ताले सेरियम 4 प्लस टा कोन हो +3 को चेंज हे परिबो जदि +3 को चेंज होला ताले सेरियम 4 प्लस रो से सेरियम +3 को चेंज होछि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ताले बर्तन होछि कोन रिडक्शन ना ताले जदि रिडक्शन होछि ताले सेरियम 4 प्लस टा गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अरे हे परिबो नै परिबोनी अरे हे परिबो Yes, sir. अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन को गोटे क्वेश्चन को तार आंसर टा जदी हेई परछि मते दियो न तुम क्वेश्चन को बुझिया को ट्राई करो जे केमति आछि आ एउडा ही तमर क्वेश्चन पळे आसीबो जदी क्वेश्चन आछि कॉपर has exceptionally positive E naught M2 plus 2 M value why हमला कॉपर रो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अछि एरा कोन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल वी कैन से ऑब्वियसली पोटेंशियल ताले कॉपर रो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ता सेटा होची कोन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ताले बर्तन तुम आंसर दियो कॉपर रो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ता कोन पे पॉजिटिव अरे कोन पे पॉजिटिव एनीवन तमे देखो तमर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तमे कहउछो ई नॉट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में काउ कहया फास्ट देखो ध्यान दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में काउ कहया तम पाखरे अछि कॉपर टिके जिंसटा को भलसे बुझिया को चेष्टा करो कोन मु कहया को चाहूची तम पाखरे अछि कॉपर खाली कॉपर नै रे तम पाखरे सबले कॉपर सॉलिड दियो तम पाखरे कोन दियो कॉपर सॉलिड को तम काम होची कोन तमे कॉपर गैस रे फास्ट कन्वर्ट करियो ताले जो प्रोसेस को कोन कहबा कॉपर सॉलिड रो कॉपर गैस को कन्वर्ट करो प्रोसेस को कोन कहबा sublimation. obviously sublimation that means del H sublimation obviously solid रू गैस को कन्वर्ट होजी ताले del H sublimation बोली कहबा तापरे कॉपर गैस रू मु करबी दिटा इलेक्ट्रॉन को काढबी कॉपर 2 प्लस गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ए प्रोसेस को हम कोन कहबा एटा कोन कहबा कॉपर गैस रू दिटा इलेक्ट्रॉन को काढ दोजी कॉपर 2 प्लस हे होजी
ए प्रोसेस को कोन कहबा हम्म, अरे के कह परिबो Sir, oxidation. ऑक्सीडेशन केमदी इलेक्ट्रॉन टा बाहर ची ऑब्वियसली अलगा किछि को खाली ऑक्सीडेशन कहबो की अरे आयोनाइजेशन the amount of energy required to remove electron from gaseous neutral atom neutral gaseous atom रो इलेक्ट्रॉन काट दवा ताले ऑब्वियसली गोटे काढो कि दिटा काढो जा काटो काढो ठीक अछि हम काढुजे ताले ऑब्वियसली मुटा कोन आयोनाइजेशन एंथैल्पी आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एंथैल्पी देन कॉपर 2 प्लस रा गैस अछि मु जेतरे पानी ऐड करबी पानी ऐड करके कॉपर 2 प्लस aqueous बने देबी ए प्रोसेस टा कोन को जाय ए प्रोसेस जो एनर्जी टा इन्वॉल्व हुए से प्रोसेस एनर्जी टा कोन को जाय अरे कोन को जाय एटा को जाय हाइड्रेशन एंथैल्पी जेतबेले गोटे गैसियस पॉजिटिव स्पेसिस को हमें वाटर रे ऐड करिवा सेतबेले एनर्जी रिलीज हबो एनर्जी रिलीज होला माने एटा हम कोन हाइड्रेशन एंथैल्पी एटा कहे कोन हाइड्रेशन प्रोसेस तने वाटर ऐड होजी हाइड्रेशन एंथैल्पी अरे तीनटा का प्रोसेस बुझी पारलो ना बुझी पारलो फास्ट कॉपर रु तमरो कॉपर सॉलिड रु कॉपर 2 प्लस aqueous केमती बनुची तम तीनटा स्टेप रे बनुची कॉपर सॉलिड रु कॉपर 2 प्लस aqueous ता तम तीनटा स्टेप रे बनि परिबो फास्ट स्टेप कोन करिया सॉलिड रु डायरेक्ट हम इलेक्ट्रॉन बाहर कर परिबानी आ सॉलिड रु पॉजिटिव कर परिबानी तान हमें कोन करिया फास्ट सॉलिड को गैस रे कन्वर्ट करिया तान हमहु सब्लिमेशन एनर्जी दरकार तापर जो एनर्जी इन्वॉल्व होला त हम कहबा एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन देन हमरो कॉपर टा कॉपर 2 प्लस गोटे इलेक्ट्रॉन काढा कि 2 इलेक्ट्रॉन काढा ऑब्वियसली हमरो 2 इलेक्ट्रॉन हम जेतु M2 प्लस दी जिमु 2 इलेक्ट्रॉन को काढिबी ताले प्रथम आयोनाइजेशन एंथैल्पी मु कहली फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी और सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी देन कॉपर 2 प्लस गैसियस टा को वाटर ऐड करली कॉपर 2 प्लस aqueous बनला जेटा को कहली कोन हाइड्रेशन एंथैल्पी अरे तीनटा का प्रोसेस बुझी पारलो ना बुझी पारलो नहीं Yes, sir. अच्छा ताले देखो सर ताले देखो वर्तमान तमे जानछ जे सब्लिमेशन एंथैल्पी टा पॉजिटिव ना नेगेटिव की कहबो अरे सब्लिमेशन टा पॉजिटिव ना नेगेटिव तने हम एनर्जी देले सब्लिमेशन हबो ना एनर्जी रिलीज हुए सब्लिमेशन रे सर एनर्जी रिलीज हुए एनर्जी रिलीज हुए तम घरे अछि फॉर एग्जांपल कॉपर अछि सॉलिड रे अछि तम ताको एते हीट करिवो जे तम गैस रे कन्वर्ट हो गोटे जिंस अछि तम हीट ताको करछो से गैस रे कन्वर्ट हो तम गैस आउरी बढ़ी जाउछ तम घरे जो टांकी अछि 2 केजी अछि तम जले सॉलिड रु गैस को कन्वर्ट कर दबो तमरो 2 केजी टा 5 केजी हो जिवो पुनी 10 केजी हो जिवो तमे गैस बिजनेस स्टार्ट कर दियो ताले जे तमरो एनर्जी टा रिलीज होउची जदि एनर्जी तम रिलीज होउची तम एनर्जी किछि खर्च होउनी गोटे गैस सॉलिड जिंस अछि सॉलिड को तमे गैस को कन्वर्ट करछो भाई पड़छो तो सॉलिड को गैस को कन्वर्ट करछो कि तम घरे एनर्जी टा रिलीज होउची तम अधिक एनर्जी मिलुची तमन तम 2 केजी गैस थिबो सेटा 5 केजी हो जिवो 5 केजी रे 10 केजी हो जिवो अरे थोड़ा सेमती हुए सब्लिमेशन ने सबले हमको हीट दवा को पड़े अरे बुझी पारछो ना बुझी पारनो गोटे सॉलिड जिंस को गैस रे कन्वर्ट करिवो फॉर एग्जांपल मु जी कैम्फर कर्पूर को बाहर आनी रखि दो से कोन वेपर हो ना तमने हीट दवा को पड़ुची डेलेक्स टा सेठी पॉजिटिव तमने हमको एनर्जी दवा को पड़ुची एंडोथर्मिक प्रोसेस गोटे ताने एटा होची कोन डेलेक्स सब्लिमेशन टा सबले होची कोन ऑलवेज पॉजिटिव एटा होची कोन ऑलवेज पॉजिटिव अरे बुझी पारलो ना बुझी पारलो नहीं यदि मु कहूँ आयनाइजेशन पोटेंशियल द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन से तो न्यूट्रल ले अछि ताको हमें एनर्जी देला पर जे इलेक्ट्रॉन टा बाहरियो ताने एटा भी होची कोन तमर पॉजिटिव एटा भी होची कोन ऑलवेज पॉजिटिव आयनाइजेशन एंथैल्पी एटा भी तमर कोन ऑलवेज पॉजिटिव बोलना हाइड्रेशन एंथैल्पी कोन जेतबेला हमें गोटे पॉजिटिव स्पेसिस को वाटर रे ऐड करछे सेतबेला एनर्जी रिलीज होउची से एनर्जी टा को जे हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज्ड हमने एटी को ड्यूरिंग हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज्ड एनर्जी बाहर होची ताले एटा तमर डेलेस टा कोन हिजो एटी डेलेस टा कोन नेगेटिव एटी वैल्यू टा कोन नेगेटिव हो ताले वर्तमान तमर जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल जे कहूची ई नॉट ताले इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल हम कोन करिया तीनटा जिंस को मिसी हिची कोन हिची तमे देखो M2 प्लस और M इन्वॉल्व हिची ताले गोटे सॉलिड आ गोटे M2 प्लस aqueous इन्वॉल्व हिची ताले तीनटा का प्रोसेस रे हम जाउची ना ताले एई प्रोसेस टा को जे इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ताले इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल टा होची कहार सम सब्लिमेशन एंथैल्पी रो सब्लिमेशन एंथैल्पी आउ कहार आयोनाइजेशन एंथैल्पी से फर्स्ट हो कि सेकंड हो आयोनाइजेशन एंथैल्पी आउ कहार हमें aqueous फॉर्म करू हाइड्रेशन एंथैल्पी बर्तमान हम जानले कोन तमरो सब्लिमेशन एंथैल्पी टा सबले पॉजिटिव वैल्यू आसीबो आयनाइजेशन एंथैल्पी कोन हबो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड एटी भी रिक्वायर्ड हेटी भी रिक्वायर्ड किंतु हाइड्रेशन एंथैल्पी द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ताने एटा नेगेटिव ताले बर्तमान हम क्वेश्चन आसी कॉपर रो पॉजिटिव वैल्यू
ताले कपर रो इनोटा कोन पे पॉजिटिव हेतिबो अरे कपर रो इनोटा कोन पे पॉजिटिव हेतिबो Sir, sum of sublimation and ionization energy must be greater than hydrogen energy. ऑब्वियसली तमरो जो सब्लिमेशन एनर्जी आ आयनेशन एंथैल्पी टा अधिक थिबो कारण हाइड्रोजन टा कम नेगेटिव ना तमरो कम नेगेटिव एटा अधिक नेगेटिव अधिक पॉजिटिव हेतिबो ताले मु कहि परिबि जे इट इज ड्यू टू हाई कोन सब्लिमेशन एंथैल्पी हाई सब्लिमेशन एंथैल्पी हाई आयनेशन एंथैल्पी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी and low कोन हाइड्रोजन एंथैल्पी लो हाइड्रोजन एंथैल्पी कारण तीनटा जंक तो मिसौजो तीनटा जंक मिसेले भालुटा आसी पॉजिटिव तमने एटा को बड़ कर दो एटा को बड़ कर दो एटा को नेगेटिव कर दो जदी फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आसीबो कॉपर 2+ रो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टा कोन बाय नेगेटिव तमे कोन लिखिबो काईना तमरो सब्लिमेशन टा छोटो आयनेशन टा छोटो हाइड्रोजन टा होची बड़ लार्ज हाइड्रोजन एंथैल्पी अरे बुझ पारलो ना बुझ पारलो क्वेश्चन आंसर केमति करिवो अरे परिबो हाँ sir. देखो ये टाइप रो क्वेश्चन जदी आछि त माने निहाती ध्यान दବାକୁ पड़िबो ठीक अछि ठीक ध्यान दबो एई जो कांसेप्ट को ध्यान दबो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल इक्वल टू सब्लिमेशन एंथैल्पी प्लस आयनेशन एंथैल्पी प्लस हाइड्रोजन एंथैल्पी जानियार अछि सब्लिमेशन एंथैल्पी बाजे पॉजिटिव आयनेशन होची पॉजिटिव हाइड्रोजन होची कोन नेगेटिव जद तुम क्वेश्चन दोजी जद तुम क्वेश्चन दोजी व्हाई copper 2+ is more stable more a परीक्षा guaranteed question आसीबो why copper 2+ is more stable in aqueous solution ने copper 2+ टा कोन बाय स्टेबल हबो काहे ना एथिरे जेतबे copper 2+ बनौचो हाइड्रोजन एंथैल्पी टा काहे हम जानचे कोन हमर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का छाड़ी दियो एटी हाइड्रोजन एंथैल्पी टा बहुत अधिक आ हाइड्रोजन एंथैल्पी टा कोन नेगेटिव एनर्जी रिलीज ताले गोटे जिंस तमे गोटे काम करछो तमर एनर्जी बाहरुची गोटे काम करछो तमर एनर्जी बाहरुची एनर्जी तमु मिलुची मु गोटे काम करछी मते पैसा मिलुची मु से कामटा करबी ना खुशी खुशी करबी ना गोटे काम करछी गोटे बिजनेस करछी से बिजनेस रे मोर लॉस हेई चलजी मु से कामटा केबे करबी की करबी ना ताले सिमिलरली ताले मु कहबी कोन ड्यू टू लार्ज नेगेटिव हाइड्रोजन एंथैल्पी लार्ज नेगेटिव हाइड्रोजन एंथैल्पी जेतु हमरा हाइड्रोजन एंथैल्पी टा नेगेटिव रिलीज होउची आ बहुत अधिक रिलीज होउची सेति पई कॉपर 2+ टा कोन स्टेबल जदी कॉपर प्लस टा होची अनस्टेबल जदी क्वेश्चन आसी व्हाई copper plus is unstable in aqueous solution कौन आंसर हबो अरे कौन आंसर हबो Sir, it undergoes this propanation. वेरी गुड तमे केबे कह दबन जे इट हैज लो नेगेटिव हाइड्रोजन एंथैल्पी ठीक अछि लो चलिबो किंतु कॉपर प्लस टा एक्जिस्ट नहीं करेनी कॉपर प्लस टा तमरा कॉपर 2+ और कॉपर को चेंज हेजिवो तले देखो +1 रो +2 गेला ऑक्सीडेशन दीटा ठी नै जाउजी पुनी कॉपर प्लस टा कोडी गेला 0 को चेंज होला रिडक्शन और सेम स्पेसीज जेतबले ऑक्सीडेशन होची रिडक्शन होची तको हम कहै डिस प्रोपोर्शन रिएक्शन दैट मींस कॉपर प्लस चेंज हो जाउची कॉपर 2+ और कॉपर को सेति पय हम कहबे रे कोन दिस इज योर वी कैन से अनस्टेबल ओके कॉपर 2+ टा कोन बाय स्टेबल लार्ज नेगेटिव हाइड्रोजन एंथैल्पी कॉपर रो कोन बाय पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल काहे ना हमरो सब्लिमेशन टा होची अधिक आयनेशन पोटेंशियल होची अधिक हाइड्रोजन एंथैल्पी टा होची कम ए जिंसटा को टिके केयरफुल देखिया पड़े ए क्वेश्चन टा सब बेले परीक्षा रे आसे आ परीक्षा रे आसियो मध्य सेति पे ध्यान दबो ठीक अछि अच्छा क्वेश्चन जदी पडुची व्हिच एलिमेंट या प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन थिला डेवी रे भी क्वेश्चन थिला व्हिच एलिमेंट प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन भी थिला इज स्ट्रांग reducing agent in +2 oxidation state and why हमर क्वेश्चन अछि तमरा को एमिति गोटे एलिमेंट को जोटा कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट रे गोटे भलो रिड्यूसिंग एजेंट कोटा हे परियो दे कहलो भलो रिड्यूसिंग एजेंट की परियो रिड्यूसिंग एजेंट माने कोन फास्ट भाव तम माइंड रे रहया दरकार कोन केमिति क्वेश्चन को सॉल्व करियो बहुत इजी तमर देखि जे एमिति गोटे एलिमेंट अछि व्हिच एलिमेंट इट इज स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट तम से रिड्यूसिंग एजेंट थिबो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट रे रिड्यूसिंग एजेंट माने कोन अंडरगोज ऑक्सीडेशन इट सेल्फ अंडरगोज ऑक्सीडेशन इट सेल्फ बहुत से बुझिया चेष्टा करो तहन तमरो गोटे एलिमेंट अछि लेट गोटे एलिमेंट मु नै जाउची कोन तमरो x नै जाउची तमरो x टा 2+ रे अछि
तमे ताको X टाको ऑब्वियसली अंडरगोज ऑक्सीडेशन इट सेल्फ और इजीली हमर इजीली कोन हो तार ऑक्सीडेशन हो जियो ताने X टाको +3 बनौजी तमे निजे भाबो टेट केयरफुली भल से बुझो टिके मु कोटा कहूची टिके आखि खोला करी टिके केयरफुली भल से बुझिया चेष्टा करो ध्यान दियो मो कहया कथा होची तमरो गोटे एलिमेंट अछि X टा +2 रे अछि तमे ताको X टाको +3 रे कन्वर्ट करूछ तार ऑक्सीडेशन होची ताले केतेबेले से स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हबो स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट हबो जेतले ऑक्सीडेशन भलो होतो माने तुमको एटा को स्टेबल प्रूव करियार अछि कारण तमे एमिति गोटे एलिमेंट कहबो कॉपर 2 हमर +2 रे अछि +2 रु ताको तमे +3 को नबो +3 टाको तमे प्रूव करियो जे स्टेबल बोली काना गोटे जिंस फॉर एग्जांपल कॉपर 2 + अनस्टेबल से +3 को चेंज होला पर स्टेबल हो जाउची आ ऑक्सीडेशन होउची ताने हम तो गुड रिड्यूसिंग एजेंट बोली कहि परिबा ताले एमिति गोटे एलिमेंट को जोटा कि +3 रे स्टेबल +2 रे स्टेबल नो +3 रे स्टेबल कहले देखिया कोटा अरे कोटा +3 रे स्टेबल अरे के एनीवन Aluminium. एल्यूमिनियम माने भाग्य भलो जे ऑनलाइन क्लास होजी रात 10टा बेलू जाई तम घरे बाड़ी के आसनी अरे डी ब्लॉक एलिमेंट को पाठ पढाउजी हमें से एल्यूमिनियम पी ब्लॉक कहलानी कोन कोन से सब पागल Sorry, sir. अरे तमरो Sir, cobalt. कोबाल्ट +3 स्टेबल बोली मु तुमको कहतली ताटू अधिक स्टेबल होची क्रोमियम क्रोमियम इज मोर स्टेबल इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम टा को बारंबार तुमको कहिजी तमरो क्रोमियम टा प्रीवियस क्लास रे तमरो करे दिल ना जेतले तुमको कहतली कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म कथा कहतली क्रोमियम टा +3 स्टेबल बोली कहतला ना कोबाल्ट टा +3 क्रोमियम टा भी +3 ताले क्रोमियम टा +3 होची कोन स्टेबल ताले तुमको एटा को प्रूव करियार अछि क्रोमियम +3 कोन पाई स्टेबल ताले क्रोमियम +3 कोन पाई स्टेबल अरे कोन पाई स्टेबल के कहबो why chromium 3 plus is stable अरे परिबो एटा ऑलरेडी करा आइची क्रोमियम 3 प्लस रो कन्फिगरेशन कोन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के कहबो अरे क्रोमियम 3 प्लस रो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के कहबो क्रोमियम 3 प्लस रो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अरे परिबो नाही परिबोनी हो ना आंसर दियो sorry, argon 18, 3D, 3, no, 3D2, 4S0, and 3D3, 4S0. मार कोन खेलो चलची 3D2 3D3 3D4 3 ना 4 ना 5 ना 2 ना कोन Sir, 3D3. 3D3 अब जेतबे बर्तन जेतबे क्लास 9 10 पिला कहबे 3D3 तमे T2G रे आंसर दियो वहाई दिला तमरो क्रोमियम 2 प्लस होची D4 क्रोमियम 3 प्लस होची D3 D3 माने सिंपल तमरो होची कोन जदि मु T2G इन जनरल ऑक्टाहेड्रल नेबी तारे 1 2 3 जेतु हाफ फील्ड अछि T2G3 टा होची कोन स्टेबल ताल तमर यार आंसर कोन लिखेर अछि आंसर लिखेर अछि जे तमरो जदि क्रोमियम 2 plus can change its oxidation state to chromium +3 कौन पाई because chromium +3 is D3 configuration and T2G3 is more stable T2G3 टा कोन मोर स्टेबल माने कॉपर 2 प्लस रे तमरो D4 कन्फिगरेशन D4 टा तमरो कॉपर सॉरी क्रोमियम 3 प्लस रे तमरो D3 आ जोटा कि होची तमरो T2G3 कन्फिगरेशन को चेंज होची तारे एटा स्टेबल ना जदि स्टेबल तारे क्रोमियम 2 प्लस टा क्रोमियम 3 प्लस को चेंज होइयो जदि चेंज होची तारे कोन होची ऑक्सीडेशन होची इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन दैट मींस क्रोमियम 2 प्लस अंडरगोज ऑक्सीडेशन ताले ऑक्सीडेशन जदि होची ताले क्रोमियम 2 प्लस टा को कोन होबे क्रोमियम 2 प्लस is a good reducing agent एटा का गुड रिड्यूसिंग एजेंट बोली कहबा ए बेला तुम क्वेश्चन ना आंसर टाको सॉल्व करियो तमरो कोन परीक्षा रे पड़ची क्रोमियम एमिति गोटे एलिमेंट अछि जोटा कि +3 +2 रे गुड रिड्यूसिंग एजेंट कोन पई काना क्रोमियम 2 प्लस टा अंडरगोज ऑक्सीडेशन टू +2 टा को +3 को चेंज होची कोन पई ड्यू टू T2G3 कन्फिगरेशन स्टेबल कन्फिगरेशन दैट्स व्हाई क्रोमियम 2 प्लस इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट अरे परिबो नाही परिबोनी अरे परिबो Yes, sir. अच्छा आउ केते क्वेश्चन आस परिबो देखो
अच्छा सिमिलरली ए रिलेटेड मु आ गोटे क्वेश्चन कहि दोची एमती क्वेश्चन आस परिबो जे Mn3 plus Mn3 plus is a good oxidizing agent but chromium 2 plus is a good reducing agent why हमको एवला क्वेश्चन आसीबो जे Mn3 plus टा होची गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किंतु क्रोमियम 2 plus टा होची गुड रिड्यूसिंग एजेंट कोन पय फास्ट हम गोटे गोटे कर सॉल्व करबा फास्ट ए पार्ट को जीवा Mn3 plus इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माने कोन अरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माने कोन Sir, it undergoes reduction easily. obviously it undergoes reduction easily तार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रो कोन हो रिडक्शन हो ताले तमर Mn3 plus देजी कोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ताले Mn3 plus टा को तमे रिडक्शन करेबो रिडक्शन माने डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट ताने Mn3 plus टा को Mn2 plus रे कन्वर्ट करेबो आ तुमको एइटा को प्रूव करिया अछि कोन स्टेबल एना हमर प्रोडक्ट टा फॉर्मेशन हो दरकार ना जदि Mn2 plus स्टेबल हेइथिबो ताहले ही से Mn3 plus टा Mn2 plus को चेंज होबो ताले Mn2 plus टा कोन बाय स्टेबल ताले लिखि परिबा कोन Mn3 plus can change to Mn2 plus को चेंज परिबो कोन बाय ड्यू टू स्टेबल कोन D5 कन्फर्मेशन हमर D5 टा होची हाफ फील्ड और D5 टा कोन स्टेबल जेतो टा स्टेबल कन्फर्मेशन D5 हाफ फील्ड कन्फर्मेशन सेति पई हमें कोन करबा Mn3 plus टा ऑटोमेटिक Mn2 plus को चेंज हेजिवो जदी चेंज होउची कोन होउची रिडक्शन माने गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अरे बुझ पारलो ना बुझ पारलो नहीं सो Mn3 plus is a good कोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अछि क्रोमियम 2 plus इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट ऑलरेडी मु करे देली क्रोमियम 2 plus टा गुड रिड्यूसिंग एजेंट माने इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन इजीली ताले क्रोमियम 2 plus रो ऑक्सीडेशन करेबो ताले क्रोमियम 2 plus रो ऑक्सीडेशन माने क्रोमियम 2 plus टा कोडी चेंज होबो क्रोमियम plus 3 को तमु प्रूव करिया जे एटा होची स्टेबल केमति स्टेबल ऑब्वियसली D3 और D3 माने T2G3 कन्फर्मेशन में क्रोमियम 3 plus होची स्टेबल सेति पई क्रोमियम 2 plus टा क्रोमियम 3 plus को चेंज होला अरे बुझी पारुचो ना बुझी पारुनो Sir, no problem. अच्छा नेक्स्ट जदि हम देखिबा नेक्स्ट ऑलरेडी क्वेश्चन कराई हाईएस्ट फ्लोराइड of manganese is MnF4 whereas highest oxide is Mn2O7 why हमर manganese रे जदि फ्लोराइड कहूची manganese रो फ्लोराइड कॉम्प्लेक्स होची MnF4 किंतु manganese जदि ऑक्साइड कहूची Mn2O7 कोन पय अरे के आंसर दे परिबो ऑलरेडी मु करैची अरे क्वेश्चन करैची तुम खाता रे अछि एनीवन आंसर दे हबो कारो अरे हबो ना हबोनी Sir, oxygen has the ability to form multiple bonds. obviously multiple bond highest oxidation state तमरे MnF4 रे तमरो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज टा अछि +4 रे माने मीडियम ऑक्सीडेशन स्टेट रे अछि किंतु Mn2O7 रे तमरे मैंगनीज टा कहै छै +7 ने अब +7 माने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तमर मु कोन कहतिली मेटल टा जतले हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट रे थियो ताको ऑक्सीजन स्टेबलाइज करियो ना कि फ्लोराइड कोन पे ऑक्सीजन स्टेबलाइज करियो मल्टीपल बॉन्ड करिकी सो यू कैन राइट डाउन ऑक्सीजन और metal with highest oxidation state exists as oxide form ये सब ऑक्साइड ऑक्सीजन से तो बाइंड करिकी ऑक्साइड फॉर्म रे एग्जिस्ट करतुवे कोन पई ड्यू टू ऑक्सीजन has ability to form multiple bond याना फ्लोरीन टा तमर सिंगल बॉन्ड करि परिबो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड करि परिबो ना had ability to form multiple bond and stabilize metal
stabilize metal তাহলে মেটালটাକୁ ତମର stabilize କରିବ କିଏ ଅକ୍ସିଜେନ କଣ ପାଇଁ due to it has ability to form multiple bond ଆରେ ହେଇପାରିବ ନା ହେଇପାରିବନି Yes, sir. ଆଚ୍ଛା ଯଦି ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି Zn2 plus salts are white while copper 2 plus salts are blue why ଆମର Zn2 plus ର କଲର ଟା ହଉଛି white ତାର salt ର କଲର ହଉଛି white କିନ୍ତୁ copper 2 plus ରେ ହଉଛି ତମର କଣ blue କଣ ପାଇଁ କଣ ପାଇଁ अरे एक क्वेश्चन आंसर तो कोई दियो सर कॉपर जिंक 2 प्लस ये D10 कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है इसलिए वो वाइट रहता है अरे यही तो तुम्हारा प्रॉब्लम है मेरा प्रॉब्लम कि तुम्हारा प्रॉब्लम मुझे पता नहीं है एग्जैक्ट आंसर नहीं बोल रहे हो ये सारा का सारा घूम रहे हो The transition. बस मुझे यही आंसर चाहिए तुम कुछ मत लिखो कुछ भी मत लिखो खाली लिख दो ड्यू टू डिटेंशन Zn2 plus white due to no detention copper 2 plus blue due to detention Zn2 plus has a D10 configuration that's why it is ମୁଁ D10 ର କଥା ପଚାରୁଛି ମୋର ଯୋଉଟା ଆନ୍ସର ଦରକାର ମତେ ସେଇଟା ଆନ୍ସର ଦରକାର ସେଠି ଯଦି ଦେଇ ପାରିବ ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ଲେଖିବ ନହେଲେ ଟୋଟାଲ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବ ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ Zn2 plus means D10 configuration D10 means no DD transition possible no DD transition possible but copper 2 plus means D9 D9 means DD transition possible DD transition possible এটা তো DD transition এটা তো লিখিବାକୁ পড়িବ না এটা তো আগে লিখিବାକୁ পড়িବ না DD transition এই লাইনটা এই ওয়ার্ডটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট DD transition not possible DD transition possible এତିକି ଜିନିଷ ଆମେ ଯଦି ଲେଖିବା ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ଲେଖିବା ତମେ ବୁଲାଅନି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ର ଆନ୍ସରଟାକୁ ତମେ ବୁଲାଅନି ଏକ୍ସାକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଯୋଉଟା ସେଟା ଆନ୍ସରଟାକୁ ଟ୍ରାଏ କର ଲେଖିବା ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି ଆଚ୍ଛା এটা তো क्वेश्चन ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ cerium 4 plus why is used as oxidizing agent because it is changed its oxidation state to +3 এটা ଆମେ ଦେଖି ଦେଇଛେ এটা ଜିଙ୍କ 2 ପ୍ଲସ୍ ଟା ହ୍ୱାଇଟ ବି ଆସିପାରିବ ଜିଙ୍କ 2 ପ୍ଲସ୍ ଟା ତମର କଲରଲେସ୍ ବି ଆସିପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜନ ହବନି ଯେ ହ୍ୱାଇଟ କଣ କଲରଲେସ୍ ବି ଆସିପାରିବ ଠିକ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଇପ ର क्वेश्चन ତମର ଆସିପାରିବ ସେମ ଅଲରେडी ଆମେ ପଢି ଦେଇଛେ କିନ୍ତୁ फिर भी ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବା E naught value of Mn3 plus to Mn2 plus is highly positive that is plus 1.57 एतिकी as compared to chromium 3 plus to chromium 2 plus और manganese 3 plus to manganese 2 plus टा होची highly positive value E naught value जोटा कि होची कोन 1.57 किंतु हम कहूची chromium 3 plus to chromium 2 plus रो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल टा एते अधिक नु ये कम अछि कोन भाई अरे कोन भाई की कह परिबो Sir, high sublimation and ionization enthalpy. जोटा जो जिंसटा बुझिलो मु सेहीटा सबटा लिखि दवा अरे जहा गोटे बुझिलो सबटा आंसर से लिखि दवा सबटा हाइड्रोजन मॉडल लिखि पळे आसो सबटा लांथर को ड्यू टू लांथर कंट्राक्शन ये भी आंसर को अरे टिके भाबिबा ए विषय रे एटी सब्लिमेशन कथा आसुनी एमिति जे इनोट वैल्यू आइला माने खाली सब्लिमेशन पसेबी इनोट आइला माने हाइड्रोजन पसेबी टिके भाबी बोलछे तमरो Mn3 प्लस टा Mn2 प्लस को चेंज होउची होउची कोन रिडक्शन ताने ए जो वैल्यूटा देजी एटा कोन रिडक्शन पोटेंशियल आमे जान जे जहार रिडक्शन पोटेंशियल अधिक तार रिडक्शन हबो ना हबो मु तुमको कहजी ना आमे जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढुतले जहार रिडक्शन पोटेंशियल अधिक रिडक्शन पोटेंशियल ताने तार हबो रिडक्शन जहार रिडक्शन पोटेंशियल कम तार हबोनी रिडक्शन ताने तमरो Mn3 प्लस टा Mn2 प्लस को चेंज होउची Mn3 प्लस टा तमरो Mn2 प्लस को चेंज होउची और यार जो E नॉट वैल्यू ताने मीज रिडक्शन पोटेंशियल टा तमरो 1.57 ताने हाई वैल्यू क्रोमियम 3 प्लस टा क्रोमियम 2 प्लस को चेंज होउची एटा तो मु देची E नॉट वैल्यू टा होची लेस
ताले बर्तमान दीटा रिएक्शन भीतर को रिएक्शन टा होतबो अरे रिएक्शन टा को रिएक्शन टा होतबो Sir, Sir, कोटा होतबो अरे Mn3 + 2 Mn2 प्लस ना Cr3 + 2 Cr2 प्लस obviously एना दीटांग रिडक्शन जार रिडक्शन पड़े से अधिक तार तो रिडक्शन हो ना ताल तुमको कहर अछि Mn3 + 2 Mn2 प्लस रिएक्शन होउची कोन बाय रिएक्शन होउची Mn2 प्लस स्टेबल थियो तुमको प्रूफ करियर अछि जे Mn3 + Mn2 प्लस ता होची स्टेबल बस एतिकी जिंस बुझी पड़तो ना क्वेश्चन टा केंदी पडुची तमरो क्वेश्चन पडची जे रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Mn3 + 2 Mn2 प्लस ता हाई क्रोमियम 3 + 2 क्रोमियम 2 प्लस ता होची लेस ता माने क्रोमियम 3 + 2 क्रोमियम 2 प्लस रो रिएक्शन टा होउ नथिवो ए रिएक्शन टा होउ नथिवो ए रिएक्शन टा होउथवो कोन बाय होउथवो तमे एटा को स्टेबल प्रूफ करियर अछि केमिति स्टेबल हबो Mn2 प्लस D5 कन्फर्मेशन ना बस स्टेबल हे गेला तमरो D4 रु गोटे जिंस D5 को कन्वर्ट होउची एटा हबो ना हबो माने पॉजिटिव वैल्यू आइला एटा तमरो D3 माने ऑलरेडी T2G3 रे अछि ऑलरेडी ए स्टेबल रे अछि ये केबे भी अनस्टेबल को जीवो की ता सिंपल तम लिखियार अछि कोन बाय Mn3 प्लस और Mn2 प्लस रो वैल्यू अछि अधिक ताले मु कहबि जे Mn3 प्लस can undergoes reduction to Mn2 plus Mn3 plus to Mn2 plus हे परियो कोन भाई due to D5 stable configuration of Mn2 plus ताले Mn2 plus रो कन्फर्मेशन होची D तमरे तमरो Mn3 plus माने D4 रो D5 को चेंज होची ताले ऑब्वियसली D5 टा होची स्टेबल ना ताने रिएक्शन टा हबो रिएक्शन टा हला माने पॉजिटिव वैल्यू आसिला अरे बुझी परछो ना बुझी परनो अरे बुझी परछो yes, sir. अच्छा देखो एई टाइप रो क्वेश्चन एमिति नु जे ई नॉट वैल्यू आइला माने मु सबदा पस देबी तो एग्जैक्टली पार्ट गोटे एक थरा क्वेश्चन उडा को भलो से खाता लिखिबो लिखसला पर गोटे थरा रिवाइज मारिबो रिवाइज मारले एग्जैक्ट आंसर ता मन निकाउ चेष्टा करिवो जदी मन रखिबो ताले मते पचारिबो जे डाउट कोन हला ए क्वेश्चन डायरेक्ट थुआई दिबो एग्जाम रे जदी क्वेश्चन तमर पडुची राइट डाउन क्वेश्चन ऑलरेडी करे देची राइट डाउन एनी one similarity and one difference between lanthanoids ये क्वेश्चन में पढ़ला डीएवी रे and actinoids और actinoids और lanthanoids भीतर डिफरेंस गोटे सिमिलरिटी कहबो गोटे डिफरेंस कहबो फास्ट मु देखिबी सिमिलरिटी ताले बर्तमान मते को lanthanoid और actinoid भीतर सिमिलरिटी कोन अरे सिमिलरिटी कोन sir, common oxidation state plus 3. obviously lanthanoid रे भी common oxidation state +3 actinoid रे +3 that means common oxidation state of lanthanoids and actinoids are +3 second गोटे गोटे पचार जे हम आगो गोटे लिखि दवा आ गोटे कोन सिमिलरिटी अछि करे देखिया अरे सिमिलरिटी कोन अछि आ कोन जेंत तमर lanthanoid contraction देखा होजी सेमती actinoid contraction भी देखा जाय सेमती भाबी दबन जे lanthanoid की contraction ही पड़छि actinoid नाही actinoid contraction ता आहुरी पावरफुल काना हमर lanthanoid contraction ता कोन बय ड्यू टू पुअर सेलिंग इफेक्ट ऑफ 4f सब सेल 5f रो सेलिंग इफेक्ट आहुरी पुअर माने actinoid रो contraction भी अछि like lanthanoid contraction actinoid also show actinoids also show actinoid contraction simple ताले डिफरेंस लिखिया बर्तन ताले डिफरेंस कोन हो दिया कहलो गोटे डिफरेंस कहलो देखिया कोन डिफरेंस Sir, lanthanoid रे last electron 4f subcell रे enter कला obviously lanthanoid रे last electron enter into 4f actinoid रे last electron enter into 5f आ कोन डिफरेंस आसीबो Sir, lanthanoid सब element except pm is natural and actinoid रे सब ही radioactive. yes very good
ताले हम कहि जे except PM promethium all are natural in lanthanoids lanthanoids सबुडा होती कोन natural except PM किंतु actinoid रे all actinoids are radioactive जेते सब actinoid अछन समस्त कोन radioactive बोली हम कहि परिबी लांथानोड एक्टिनोड भितर डिफरेंस आगो ढिपरिबो जे लांथ देखो 5 हमरो एक्टिनोड होची 5F त लांथानोड एक्टिनोड जदि हम कंपेयर करबी एक्टिनोड रो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एबिलिटी होची अधिक लांथानोड रो कम आसीबो ठीक और नो डाउट अछि किंतु एक्टिनोड रो आहुरी अधिक आसीबो ठीक अछि एटा भी गोटे हमरो पॉइंट हि परिबो एटा को ध्यान दवा ठीक अछि अच्छा तो आउ को टाइप रो क्वेश्चन आस परिबो अच्छा ताले जदि क्वेश्चन आसुजी देखो আমি জানছি যে কমন অক্সিডেশন স্টেট of transition element is केते कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट केते अरे व्हाट इज द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट +2 obviously +2 except one element what is that what is the element what is that element and why explain कोन भाई एंती होची तमरो हम जानचे ट्रांजिशन एलिमेंट रो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होची +2 केवल जणे देखायनी जणे +2 देखायनी सेटा किए अरे सेटा किए So scandium. स्कैंडियम यस वेरी गुड ताले वन एलिमेंट तार एटा होची कोन स्कैंडियम कोन भाई काना स्कैंडियम रो कन्फ्यूजन होची कोन आर्गन 18 4s 2 3d1 तमरो स्कैंडियम ना को +2 देखौची ताले ऑब्वियसली स्कैंडियम कोन 3d1 4s दुटा इलेक्ट्रॉन पळेबो 3d1 ना किंतु जदी स्कैंडियम टा +3 देखौची ताले तमरो कन्फ्यूजन कोन हबो आर्गन 18 4s 0 3d0 that means nearest inert gas configuration जेहेतु नियरेस्ट इनर्ट गैस कन्फिगरेशन सहित देखौची से +2 न कि +3 देखाए ताने सेति पई स्कैंडियम शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कोन भाई बिकॉज ऑफ स्टेबल इनर्ट गैस कन्फिगरेशन एंड आल्सो आ गोटे क्वेश्चन मु कहि दे परबी और रे स्कैंडियम नेवर शो variable oxidation state আমি জানছি যে ট্রাইজন এলিমেন্টটা ভ্যারিয়েবল অক্সিডেশন স্টেট শো করিবে কিন্তু স্ক্যান্ডিয়াম করিবনি কারণ স্ক্যান্ডিয়াম +2 भी দেখাউনি যদি +2 +3 দেখান্তা মু কইতানি ভ্যারিয়েবল সে কেবল +3 দেখাউছি +3 মানে কোন মে দেখাউছি কাইনা +2 দেখাইলে आ गोटे इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली हम एनर्जी दउची आ गोटे इलेक्ट्रॉन बाहर गेले से स्टेबल हो जाउची स्टेबल इनर्ट गैस कन्फिगरेशन आर्गन से तो समान हो जाउची तो ऑब्वियसली से सेटा ही हबो अरे बुझ पारला ना बुझ पारला अरे पल्ला आज्ञा सर अच्छा लाउ कोन क्वेश्चन आस परिबो सिंपल क्वेश्चन आस परिबो जे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट आर हाई our enthalpy of atomization of transition element are high ये क्वेश्चन भी कर दो सिंपल क्वेश्चन enthalpy of atomization of transition elements are high why कौन भाई हम कहलो enthalpy of atomization of transition element are high why अरे कौन भाई अरे एवरीबॉडी जानना आंसर अरे एवरीबॉडी अरे हाँ ना आंसर किए दे परियो मते आयुषी प्रेजेंट Yes, sir. हवनी ना sir. अच्छा हवनी वेरी गुड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन माने कोन मते कहलो देखिया फास्ट मते कहलो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन माने कोन
एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन माने होची द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to convert 1 mole of substance, 1 mole of substance into atoms. तमे एटम रे कन्वर्ट करिवो ताने सबडा बॉन्ड को ब्रेक कर दो तमे सब होजी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट आर हाई ताने ट्रांजिशन एलिमेंट रे तमे सब एलिमेंट को सब फॉर एग्जांपल आयरन टा बहुत सारा आयरन एटम अछि तमे 1 मोल आयरन एटम को ब्रेक करी खाली आयरन एटम गोटे 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 कर दो एटा डिफिकल्ट कोन बा डिफिकल्ट होइतिबो की कहि परिबो आ कोन बा डिफिकल्ट होइतिबो अरे परिबो नहीं परिबो Sir, lanthanide contraction में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी को अरे हाइड्रोजन तुमको क्वेश्चन कौन पता है कोड आंसर दो अरे सिंपल बॉन्ड टा कौन तुम लैंथेनाइड व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट कौन आंसर हबो अरे व्हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लैंथेनाइड ट्रांजिशन एलिमेंट आर हाई ट्रांजिशन एलिमेंट रो मेल्टिंग Sir, पॉइंट हां को metallic bond ऑब्वियसली मेटालिक बॉन्ड अरे ता भीतर बॉन्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट कोन पई हाई सर माने टिके मुंडोटा खर्च करो तो तमरो ड्यू टू मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देयर इज एक्जिस्टेंस ऑफ स्ट्रांग मेटालिक बॉन्ड पई बॉन्ड को सेपरेट करिया को हमको अधिक एनर्जी दरकार सेही क्वेश्चन तो बुलेगी पचारला अरे क्वेश्चन तो सेया पचारला ना तमरो मेल्टिंग पॉइंट माने कोन बॉइलिंग पॉइंट माने कोन तमे बॉन्ड को ब्रेक करजो बॉन्ड टा भलो दियो बॉन्ड को ब्रेक कर दोजो एठी भी तो सेया पचारला ना बॉन्ड को ब्रेक कला वाला को तुमको कोन पई अधिक एनर्जी दरकार होची कोन पई हाई ताले सिंपल आंसर दबो ड्यू टू स्ट्रांग मेटालिक बॉन्ड एक्जिस्टेंस ए ही तो आंसर हबो कोन लैंथेनाइड कंट्रैक्शन आछी तमरो एटम भीतर सब एटम को बॉन्ड ब्रेक करजो गोटे आयरन एटम अछि आ गोटे आयरन एटम अछि ए बॉन्ड को तुम ब्रेक करियार अछि केमिति ब्रेक करिवा एमान भीतर मेटालिक बॉन्ड एक्जिस्ट करछि ना ताले हम कहि परबी जे because there is existence of strong metallic bond simple जेतु strong metallic bond अछि सेति पई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन टा हाई रहला सिंपल अरे हे परिबो ना हे परिबोनी अरे हां ना ना अरे परिबो Yes, yes, sir. अच्छा यदि क्वेश्चन आछि lanthanoids has common oxidation state +3 but why europium +2 and cerium 4+ exist हमर जदि लांथानाइड रो सिंपल ऑक्सीडेशन स्टेट होची +3 ताले यूरोपियम 2+ कोन बा एक्जिस्ट करची सेरियम 4+ कोन बा एक्जिस्ट करची काना यूरोपियम 2+ टा होची तमरा कोन हम जानचे जे फुल फील्ड और हाफ फील्ड होची स्टेबल तमरा एटा होची कोन F0 कॉन्फिगरेशन 4F0 तमरा यूरोपियम 2+ ले कोन 4F0 सेरियम 4+ ले कोन हबो 4F7 तान बर्तन एटा कोन 0 एटा कोन होची हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन ना ताने हमरो F0 F7 आउ F14 एटा जो स्टेबल कॉन्फिगरेशन ना ऑब्वियसली हम जानचे त जेतु स्टेबल कॉन्फिगरेशन सेते में यूरोपियम टा तमन जेतु 2+ रे 4F0 रो एक्जिस्ट करजी आउ सेरियम 4+ रे तमर कोन 4F यस तो लैंथानाइड रो जदि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट माने सेटा होची 4F0 सेरियम 4+ माने सेटा होची कोन 4F7 जेतु हमर स्टेबल F कॉन्फिगरेशन रहूची सेते में यूरोपियम टा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ +3 को चेंज हेइ जियो परे ना हमर यूरोपियम 2+ टा 4F0 पई स्टेबल आ सेरियम 4+ टा 4F7 पई स्टेबल किंतु किछि समय गला पर से कोन कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 को चेंज हे जाय माने यूरोपियम 2+ टा यूरोपियम 3+ हे जिवो सेरियम 4+ टा सेरियम 3+ हे जिवो তাহলে ইউরোপিয়াম 2+ টা ইউরোপিয়াম 3+ को +2 ରୁ +3 গলা অক্সিডেশন তাহলে ইউরোপিয়াম 2+ ইজ গুড রিডিউসিং এজেন্ট সেরিয়াম 4+ টা তাহলে +3 को ଯିବ রিডকশন দ্যাট মিন্স ইট ইজ এ গুড অক্সিডাইজিং এজেন্ট তাহলে এবেলা क्वेश्चन তোমার আসতিলা আমি অলরেডি প্রিভিয়াস রে क्वेश्चन କରି ଦେଇଛେ
अरे परिवो नहीं परिवोनी ए क्वेश्चन ध्यान दो यदि क्वेश्चन आसुची mn plus 3 mn plus 3 show disproportion reaction why और mn3 plus टा disproportion reaction show करूची कोन भाई अरे mn3 plus टा disproportion reaction माने कोन Sir, oxidation भी होता है reduction भी ऑक्सीडेशन भी तो रिडक्शन भी तो ताले करो तमरो मैंगानीज टा +3 ताले मैंगानीज टा +3 ऑक्सीडेशन हो ताले कोन हो ऑक्सीडेशन माने इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ताले +4 को चेंज होतो mn3 plus टा पुनी रिडक्शन माने कोड की चेंज होतो +2 को चेंज होतो अमन दीटा मुने जीबी ऑब्वियसली ताले फास्ट तमरे mn3 plus टा mn4 plus को चेंज होची तमरे एटा कोन ऑक्सीडेशन mn3 plus टा mn2 plus को चेंज होची तमरे कोन रिडक्शन ताले ऑक्सीडेशन भी होची रिडक्शन भी होची ताले बर्तन तुमको यार आंसर कोन लिखिबो अरे कोन लिखिबो की कोइ परिबो एते सब जिंस कला परे किछि आईडिया आसलानी कोन यार आंसर ता मु लिखिबी अरे कोन आंसर ता लिखिबी It post redox reaction. तुमको तुम जदी कहू जे why mn3 plus so disproportionate reaction तुम जे आंसर दबो जे mn3 plus because mn3 plus change its oxidation state from mn3 plus to mn2 plus and mn4 plus एटा भूल तुम एटी डेफिनेशन दो जो disproportionate reaction न तमे disproportionate reaction का कहले डेफिनेशन दो जो तुमको क्वेश्चन पछारानी जे disproportionate reaction डेफिनेशन दियो तुम पछार जे मैंगानीज 3 plus टा कोन पाई शो करूची की कहि परिबो अरे कोन पाई शो करूची एते सब क्वेश्चन करनी किछि आईडिया आसुनी को टाइप रे आंसर करिवो अरे एते सब क्वेश्चन भीतर आईडिया आसुनी कोन आंसर लिखिया दरकार अरे कोन हबो सुश्री Sir, because it show variable oxidation state. वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के भी हबो आंसर एटा के आंसर हबोनी आउ के आंसर दे परिवो Sir, mn3 plus reduce itself and oxidize itself. है सेटा दोजी डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन एग्जांपल डेफिनेशन कहले पुनी इट विल अंडरगो रिडक्शन एंड इट अंडरगो ऑक्सीडेशन दैट्स व्हाई इट इज डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन तो व्हाई अरे के आंसर दे परिवो अरे कोन हबो सुश्री रो कोन आंसर किछि नहीं आयुष रो आंसर कोन अरे सिंपल तुमको एटा mn3 plus टा mn4 plus और mn2 plus को चेंज होजी तम तुमको mn4 plus और mn2 plus टा स्टेबल बोले प्रूव करियार अछि कोन पाई चेंज होजी सेति पे तो कहूजी तमे गोटे बर्तन तमे जे पाठ पढुछो क्लास सरला पर सोई जीवो कोन पाई सोइबो कोन पाई सोइबो देया कहलो कारण तमे पाठ पढी 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 त मुंड टिण होई गलानी पागल होई गलानी तमे आराम से रेस्ट नै जीवो mn3 plus टा mn2 plus mn4 plus को कोन पाई चेंज होजी कारण mn2 plus mn4 plus स्टेबल तमे सोई गले तमे जो स्टेबल हमको दरकार से जिंसटा तबे प्रूव करियार अछि mn3 plus और mn4 plus और mn2 plus टा स्टेबल कोन भाई ना कि हेत बड़ तुम डेफिनेशन लगे जे बिकॉज़ mn3 plus changes into mn4 plus और mn2 plus जने कहूची इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आ तमे डेफिनेशन को जो डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन न मते पथरा जे व्हाई कोन पाई शो करूची काहे ना mn3 plus टा कोन भाई mn4 plus होबो काहे mn4 plus माने कोन d3 कन्फिगरेशन mn2 plus माने कोन d5 कन्फिगरेशन आ d3 माने कोन t2g3 ने दिथिबो माने ऑब्वियसली एटा कोन हैला स्टेबल हे गेला d5 माने कोन एटा हाफ फिल्ड दिबो सेति पे एटा कोन हैला स्टेबल हे गेला ताले म आंसर लिख दे परिबो कोन mn3 plus change its oxidation state to mn2 plus कोन भाई as it is d5 half filled stable configuration and also change to कोन mn4 plus कोन भाई as it is d3 माने कोन t2g3 configuration t2g3 stable configuration
ସେଥିପାଇଁ ତମର Mn3+ ଟା ତମର କଣ ହେଲା Mn4+ ଆଉ Mn2+ କୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରିବ କଣ ପାଇଁ ଷ୍ଟେବୁଲ ସେତେବେଳେ ତ ମୁଁ କହୁଛି ଯଦି ପଚରାଉଛି କଣ ପାଇଁ ଏଟା ହଉଛି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅକ୍ସିଡାଇଜିଂ ଏଜେଣ୍ଟ କଣ ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରିଡ୍ୟୁସିଂ ଏଜେଣ୍ଟ ତମକୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଟା ଷ୍ଟେବୁଲ କରିବାର ଅଛି ଏଇ ରିଆକ୍ସନ ଟା ହଉଛି ମାନେ ତମକୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ରେ ଯୋଉ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଟା ଅଛି ସେଟାକୁ ଷ୍ଟେବୁଲ ପ୍ରୁଭ କରିବାର ଅଛି ଆରେ ବୁଝି ପାରୁଛ ନା ବୁଝି ପାରୁନ Yes, sir. ଆଚ୍ଛା ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି out of Cu2Cl2 and CuCl2 which is more stable and why Cu2Cl2 और CuCl2 ଭିତରୁ stable କୋଉଟା stable ଫାଷ୍ଟ କଲ ଦେଖିଆ ଆରେ Cu2Cl2 ଆଉ CuCl2 ଭିତରୁ stable କୋଉଟା କିଏ କହିବ ଆରେ ହବ ନା ହବନି ହର୍ଷ अग्रवाल Yes, sir. इसमें कौन सा स्टेबल होगा Cu2Cl2 और CuCl2 अरे Sir, Cu2Cl2. Cu2Cl2 वेरी गुड अरे क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने ए टिके ना को बोले दउजी पागल है जो क्वेश्चन आंसर किसी पाउनी Cu2Cl2 और CuCl2 तो तुम जानछो Cu2Cl2 CuCl2 डिफरेंस कोन एठी जदि मु aqueous form को नउची Cu2Cl2 टा ऑक्सीडेशन स्टेट एठी कोन ऑब्वियसली 2 2 तो कटि जीवो ताने Cu+ ताने aqueous form रे Cu+ एग्जिस्ट करची एठी जदि मु लिखुची aqueous form रे कोन Cu2+ एग्जिस्ट करची ताने तुमको पचारुची तमर ए दिटा ভিতর स्टेबल कोडा अरे कोडा स्टेबल Plus. obviously CuCl2 is more stable କାହିଁକି ନା ତମ ଦେଖ CuCl2 ମାନେ କଣ CuCl2 ମାନେ କଣ ତମେ ନିଜେ ଭାବ CuCl2 ମାନେ Cu2+ ଅଛି ଆଉ Cl- ଅଛି Cl- ଅଛି ଏଇ ଭଳିଆ Cu2Cl2 ମାନେ 2Cu ଅଛି Cl- ଅଛି Cl- ଅଛି ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମର ଏଇ ଜିନିଷଟା ଷ୍ଟେବୁଲ ଅଧିକ ଏଇଟା ହଉଛି ତମର ଅଧିକ ଷ୍ଟେବୁଲ CuCl2 କଣ ପାଇଁ ତମକୁ ପ୍ରୁଭ କରିବା ଅଛି କଣ କପର 2+ ଟା aqueous form ରେ ଷ୍ଟେବୁଲ ସେଥିପାଇଁ ଏଟା ହଉଛି ଷ୍ଟେବୁଲ କାରଣ କପର 2+ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କଲେ ତ CuCl2 ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିବ ନା କିନ୍ତୁ କପର ପ୍ଲସ ହିଁ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିବନି ସେ ଅଟୋମେଟିକ କଣ ହବ ତମର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ଡିସପ୍ରପୋର୍ସନ ରିଆକ୍ସନ ରେ Cu2+ ଆଉ କପର କୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ why copper 2+ is more stable aqueous form ରେ copper 2+ ଟା କଣ ପାଇଁ ଷ୍ଟେବୁଲ କିଏ କହିବ Sir, due to large negative hydration ବାସ୍ କେବଳ enthalpy. କେବଳ ଏତିକି ଯଦି ପଚାରିଥିବ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯଦି ପଚାରିଥିବ why copper 2+ in aqueous form is more stable ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆନ୍ସର ଲେଖି ଦେଇ ପାରିବା ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ପଚାରିଦେଲା Cu2Cl2 CuCl2 ଭିତରେ ଆମର ଷ୍ଟେବୁଲ କୋଉଟା ତା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲା ଆରେ CuCl2 ମାନେ ହଉଛି କପରଟା +2 ରେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛି ତାହେଲେ ସିମ୍ପଲ ମୁଁ କହି ଦେଇ ପାରିବି କଣ CuCl2 is more stable କଣ ପାଇଁ it is because copper 2+ is more stable in aqueous solution ରେ copper 2+ stable କଣ ପାଇଁ due to large or high negative hydration enthalpy ଯେହେତୁ ଏନର୍ଜି ଟା ରିଲିଜ ହଉଛି ହାଇ ନେଗେଟିଭ ହାଇଡ୍ରେସନ ଏନ୍ଥାଲପି ସେଥିପାଇଁ ଏଟା କଣ କହିବା ଆମର କପର 2+ ଟା ହଉଛି ଷ୍ଟେବଲ ଆରେ ହେଇପାରିବ ନା ହେଇପାରିବନି Yes, sir. ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଆମେ କରିକି ଆମେ କ୍ଲାସ କୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା ବହୁତ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କରିଦଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିଛି ଗୋଟେ ଥର ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବାର ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା କରିଦବା ଆଚ୍ଛା ଯଦି ମୁଁ କହୁଛି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯଦି ମୁଁ କହୁଛି କ୍ରୋମିୟମ +3 ଆଉ କୋବାଲ୍ଟ +2 କ୍ରୋମିୟମ +3 ଆଉ କୋବାଲ୍ଟ +2 ଯଦି ମୁଁ କହୁଛି ତମକୁ ଏଠି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଫିଲ୍ଡ ୱିକ୍ ଫିଲ୍ଡ କିଛି ଦେଇନି ତାହେଲେ ସିମ୍ପଲ ତମେ ହୋମ୍ସ ରୁଲ ହିସାବରେ ଫିଲ୍ ଅପ କରିବ calculate magnetic moment ତାହେଲେ କ୍ରୋମିୟମ 3+ ଆଉ କପର କୋବାଲ୍ଟ ନଟ କପର କୋବାଲ୍ଟ କ୍ରୋମିୟମ 3+ ଆଉ କୋବାଲ୍ଟ 2+ ର ତମର ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ମୋମେଣ୍ଟ କେତେ ହବ
कैलकुलेशन कर दिया केते हो अरे कैलकुलेशन नहीं परिबो नहीं परिबो व्हाट इज द फार्मूला मैग्नेटिक मोमेंट रो Sir, root over n whole into n plus 2. n plus 2 रो n plus 1 कहबे n plus 2 रो रूट ओवर क्रोमियम 3 प्लस माने ऑब्वियसली कोन d3 कॉन्फिगरेशन कोबाल्ट 2 प्लस माने कोन d7 कॉन्फिगरेशन ताले d3 माने कोन करबा एटी 1 2 3 एटी 1 2 3 को कोन हो क्रोमियम टा होची तमर क्रोमियम 3 प्लस होची d3 कॉन्फिगरेशन फॉर एग्जांपल मु t2g0 कर दोची ठीक है ऑक्टाहेड्रल कर दोची कहना इन जनरल हमर ऑक्टाहेड्रल एग्जिस्ट करे जेतो आयनिक फॉर्म रे एग्जिस्ट करची ताले 1 2 3 तीनटा ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन एटी तमर स्ट्रांग फील्ड करी वीक फील्ड करी मु कहि परिबिनी कोबाल्ट 2 प्लस अछि लेट मु वीक फील्ड कर दोची स्ट्रांग फील्ड जहा करची करी 1 2 3 4 5 6 7 एटी कर दोची ताले वर्तमान क्रोमियम 3 प्लस रे केतना ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन आउ कोबाल्ट 2 प्लस रे केतना ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन अरे केतना ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन अछि Sir, chromium रे 3 plus 3. ऑब्वियसली क्रोमियम 3 प्लस रे भी तीनटा कोबाल्ट 2 प्लस रे भी कोन तीनटा किंतु वर्तमान क्वेश्चन कोन देजी क्वेश्चन देजी जे although chromium plus 3 and cobalt plus 2 has same number of unpaired electron but magnetic moment of chromium plus 3 is 3.87 Bohr's magneton obviously तीनटा ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन माने 3.8 पाखा पाखी आसीबो 3.87 कह देजी but cobalt 2 plus is 4.87 bm why क्वेश्चन टाको भलसे बुझ तमरो क्रोमियम 3 प्लस और कोबाल्ट 2 प्लस रे ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन एठी भी तीनटा अछि एठी भी दुईटा एठी गोटे तीनटा अछि फार्मूला होची n * n + 2 रूट ओवर ताले बर्तमान कोबाल्ट 2 प्लस कोबाल्ट 3 प्लस सेम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन but magnetic moment of chromium 3 plus is 3.87 but cobalt 2 plus is 4.87 why अरे क्या आंसर दबो अरे कहा आंसर आई परिबो आयुषी आंसर हबो अरे ई परिबो ना ई परिबोनी अरे आपका आंसर ही परिबो हर्ट्स अरे हॉर्स आंसर हो सर सर क्योंकि कोबाल्ट 3 प्लस ज्यादा स्टेबल होता है इसलिए वो ऐसा कुछ भी आंसर थोड़ा ना देने हो जाएगा अरे कुछ भी आंसर देने से थोड़ा हो जाएगा अब देखो जिनसरा एटी कोन को जिनसरा एप्लीकेबल होची कोन कांसेप्ट एटी एप्लीकेबल होची हमें इन जनरल हम जान जे कोन n * n + 2 रूट ओवर एटी तो 3 सेटी तो 3 ऑब्वियसली कुछ असुविधा नहीं जल्दी एटी 3 सेटी 3 ताले ऑब्वियसली किछ तो असुविधा न होवा कथा ना मोर सिंपल कोन होवा दरकार आंसर टा एटी भी 3.87 होवा कथा सेटी भी 3.87 होवा कथा किंतु से कोची एटी तमरा कोन हो जाउची 3.87 क्रोमियम 3 प्लस रे ठीक अछि कोबाल्ट रे किंतु कोन अलगा ताले देखो ध्यान दियो कोन पई आ बहुत इंपोर्टेंट कांसेप्ट है हाई क्लास रे भलो रहछि किंतु जेतु क्वेश्चन थरे आस्तिला हम कर दउजी एटा हमर d3 एटा हमर थर्मल रे भी क्वेश्चन आस्तिला ई थरा गोटे थरो प्रीवियस रे थर्मल रे क्वेश्चन आस्तिला आ थर्मल रे क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन तो तारा जति भी तमे यूनिट टेस्ट हला ई कोन हला थर्मल क्वेश्चन करिवो कारण थर्मल क्वेश्चन रे बहुत भलसे माने टिके कॉम्पिटेंस बेस्ड क्वेश्चन करंती t2g एटी गोटे इलेक्ट्रॉन दुटा इलेक्ट्रॉन तीनटा इलेक्ट्रॉन जदि मु करछि कोबाल्ट 2 प्लस d7 ताने सिंपल नंबर करछि टी गोटे दुटा तीनटा चारटा पांचटा छटा सातटा एटी भी अनपेड इलेक्ट्रॉन तीनटा एटी भी अनपेड इलेक्ट्रॉन तीनटा ध्यान दियो आमी जो फार्मूला लिखुचे मैग्नेटिक मोमेंटम हम जो लिखुचे मैग्नेटिक मोमेंट रो फार्मूला होची कोन n * n + 2 रो रूट ओवर एटा होची तमरो स्पिन मैग्नेटिक स्पिन ओनली एटा गोटे ब्रैकेट लिखा देबो कोन स्पिन ओनली ना हमर जो मैग्नेटिक मोमेंट अछि मैग्नेटिक मोमेंट ता दी प्रकार रो हमर जो मैग्नेटिक मोमेंट अछि मैग्नेटिक मोमेंट होची दी प्रकार रो
गोटे हूँ स्पिन ओनली तार केवल गोटे आम जो मैग्नेटिक मोमेंटम आसुची तार आम जो वैल्यूटा आसुची मैग्नेटिक मोमेंटम कैलकुलेशन आसुची से दुईटा प्रकार आसपरिबो गोटे स्पिन पई आसीबो जोटा कि फार्मूला होची कोन n * n+2 रूट ओवर एटा होची फार्मूला आ गोटे होची कोन ऑर्बिटल ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन ए दुईटा को मिसेइले ही तमर आसीबो कोन मैग्नेटिक मोमेंटम रो वैल्यू ताले वर्तमान एठी तमर कोन अछि स्पिन ओनली ए जो वैल्यूटा आसुची n * n+2 n * n+2 रो रूट ओवर आसी 3.87 तार ए जो 3.87 टा कोन स्पिन ओनली आ कोन पे आसी एठी गोटे सिमेट्री लाय करूची देखो तीनटा जगह समान समान गोटे अछि सिमेट्री जेतेबेले सिमेट्री लाय करिवनी सेतेबेले तमर आसीबो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन टा केतेबेले आसे ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन केतेबेले आसे जेतेबेले अनसिमेट्रिकल आसीबो जेतेबेले अनसिमेट्रिक शेप और अनसिमेट्रिक ऑर्बिटल टा अनसिमेट्रिक आसीबो ता एठी देखो एठी दुईटा अछि एठी तमर अछि कोन एठी दुईटा किंतु एठी कोन हेगला एठी तमर गोटे अछि एठी तमर कोन अछि गोटे अछि ताले अनसिमेट्रिक आसला ना आसले नॉन सिमेट्रिक आसीला ना ताले जेतु अनसिमेट्रिक आसीला सेति पय मु कहि परिबि कोन एठी तमर आसीबो कोन ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन ताले कोबाल्ट 2 प्लस रे स्पिन ओनली टा अछि 3.87 कोबाल्ट 2 तम जदि तम कहि सारा हम केमि जानिबा जदि कोबाल्ट 2 प्लस रे तम पचारची व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंटम स्पिन ओनली तमे n * n+2 रूट ओवर करि बाहर कर दो जदि तुमको पचारची खाली मैग्नेटिक मोमेंटम बाहर करो जे तुम सिलेबस रे ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नाही फार्मूला भी तार अछि l * l+2 रो रूट ओवर डिवाइड बाय गोटे अछि फार्मूला बड़ फार्मूला टे ताने स्पिन ओनली तो जदि हमर हायर क्लास रे जदि हमु जेतबेले एमएससी कैरियर रे हमु जेतबेले पचारे ऑर्बिटल हमु जेतबेले पचारे जे मैग्नेटिक मोमेंटम कैलकुलेशन करो हमें केबे भी स्पिन ओनली n * n+2 रूट ओवर पके बाहर कर दोनी जदि सेट ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होतुबो स्पिन ओनली बाहर करिवु ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन बाहर करिवु दिटा को मिसेइबु मिसेला परे हमर आसे कोन मैग्नेटिक मोमेंटम जेतु वर्तमान हमर सिलेबस रे स्पिन ओनली अछि परीक्षा जदि मैग्नेटिक मोमेंटम ऑफ कोबाल्ट 2 प्लस रे अछि तबे स्पिन ओनली बाहर कर दियो कुछ असुविधा नै किंतु जदि स्पेशली मेंशन करछि जे क्रोमियम 3 प्लस रो होछि तमरो 3.87 किंतु कोबाल्ट 2 प्लस रो 4.87 ताले कोन भाई ताले किछ गोटे जिंस मिसुछि हमर 3.87 तो स्पिन ओनली तीनटा अनपेड इलेक्ट्रॉन ताने किछ गोटे मिसुछि कोनटा मिसुछि ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन कोन भाई जेतु कोबाल्ट 2 प्लस रे अनसिमेट्रिक जेतबेले अनसिमेट्रिक फील्ड रहइबो सेतबेले तमर कोन हो सेतबेले आसीबो कोन ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन सो आई कैन राइट डाउन द आंसर इज due to symmetrical electronic configuration in chromium 3 plus there is no orbital contribution in chromium 3 plus ताले chromium 3 plus रे तमरा d3 डायरेक्ट एटी कोनसी ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नाही बट in case of cobalt 2 plus there is orbital contribution मैग्नेटिक फील्ड रे ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन ता मिसी जाउची कोन भाई ड्यू टू अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जेतु अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन रोजी सेति भाई हमर कोबाल्ट 2 प्लस ता कोन होजी एटा ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन ता आडी जाउची आ क्रोमियम 3 प्लस रे ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नाही किंतु फिर भी परीक्षा तुम जदी पचारुची केबे मैग्नेटिक मोमेंटम रूल कोस जे स्पिन ओनली प्लस ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन मिसेया कथा किंतु जेतु हमर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन रा फार्मूला नै तमे खाली स्पिन ओनली बाहर करतली चलियो परीक्षा रे भी केबे तमर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन रे पडियोनी किंतु केवल गोटे क्वेश्चन ही अछि ए केवल गोटे ही क्वेश्चन अछि जे क्रोमियम 3 प्लस और कोबाल्ट 2 प्लस रे कोन भाई क्रोमियम 3 प्लस 3.87 कोबाल्ट 2 प्लस 4.87 माइंड रे रखि द केतले क्वेश्चन पडले काम रे आसीयो जे कोबाल्ट 2 प्लस रे ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन पई तार एक अधिक होई जाउची अरे बुझ पारलो ना बुझ पारलो Yes, sir. ठीक अछि मु यार नोट तुमको पठे दोची पीडीएफ पठे दोची आ वीडियो रिकॉर्डिंग भी देखुची केते दूर हेई परुची आ नोट को भलसे पढ़ो रिवाइज करो आ बाकी सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स और ऑर्गेनिक को भलसे रिवाइज करो हम पारे बहुत कम टाइम अछि ठीक है भलो से अधिक समय पढ़ो ट्राई करो पढ़िया पई निद इनकम्प्लीट रहू पछे किछ असुविधा नै हमर एम फुलफिल होबार अछि सेति पे टिके ध्यान दियो पढ़ा पढ़ी ऊपर फोकस करो अधिक ठीक अछि नेक्स्ट क्लास से देखियो ओके Sir.